Good evening, class. So, today we are starting this chapter, the French Revolution, a very important chapter for your exam. And this, what is expected out of you is to understand this chapter well enough and make notes in your notebook, which will be checked the next day. So, let's start this chapter, the French Revolution. Now, what do you mean by French Revolution? This revolution was started in France, and what happened was, on this day, on your 17th July, sorry, 14th July 1789, a lot of French people, they stormed in the fortress. There was a fort which was converted into a prison, and the name was Bastille. This is a 1 mark question. So on 14 July 1789, people stormed into this prison. They it because it was hated by all. So people demolished it. Demolish means they broke it. They destroyed the prison, and the prisoners were led free. And what was the reason? This fortress prison was hated by all the people of France because it symbolized, or it represented, the despotic power of the king. And why was it hated? We will study it in this chapter. So there were a lot of events which led to this outbreak, a lot of things that happened in the lives of France and French people. They were, all these reasons culminated, meaning इकट्ठे हो गए थे these reasons, और finally लोगों का गुस्सा फूट पड़ा इस दिन. So people revolted against the cruel regime of monarchy. Monarchy means king rule. तो इसके खिलाफ थे लोग, और इस रिवॉल्यूशन ने तीन आइडियाज सामने रखे थे लोगों के, विच वर लिबर्टी मीनिंग बीइंग फ्री, फ्रेटर्निटी विच मीन्स ब्रदरहुड, एंड इक्वालिटी मीनिंग ऑल आर equal. Now, coming back to the social causes, what were the causes of the French Revolution? So the first is social cause. Now what do you mean by social cause? Now this is a very important question, and try to answer it in points as it is given in your notes. Now here the term old regime is used to describe the society of France before 1789. Now all this that we are going to discuss, it was happening before 1789. Now, at that time, the French society, it was divided into three estates. The first estate included clergy. Clergy meaning group of persons who were involved in church matters, such as your priest or anyone who was related to church or working there. Now, second estate was the nobility, meaning the king and his family, the persons who have high rank in state administration. Now, there is a country in world which is your UK, United Kingdom. The capital is London. So even there, still monarchy is being practiced. There is a queen there, there is a king there, and it is still going on. So try to learn this and explore more about it. Now the third estate, it comprised of your rest people who were left after these two, such as your big businessmen, your merchants, court officials, lawyers, peasants, and artisans. Landless labor. Landless labor is that labor which did not own any land, and your servants. So this third estate included middle class also. There were rich people also, and there were poor people also. So it was a mixed bag. Now coming back to the next point, the reason why people were angry, because there was a lot of discrimination going on. What was the discrimination? This was the discrimination. The first two estates, this clergy and nobility, they were exempted from paying any tax, meaning they were not paying any tax.
the tax was paid only by the third estate. All the burden of tax paying was put on the third estate. Now, these two estates were not paying tax. One. Second, they were enjoying privileges by birth, meaning that if they are born in these if they are born to the people who are belonging to these two estates, they will be enjoying all the privileges by birth. Now, their privileges can be any, and they were also enjoying feudal privileges, meaning they will not have to pay any tax. Now, the third estates was paying the tax. Now there was another tax which was called tail, and there was this these two taxes are there. उसके अलावा और भी अलग अलग टैक्सेस थे जो इनके ऊपर चार्ज किए जा रहे थे ऑन द डेली आइटम, मतलब नमक खरीदा उस पे टैक्स, टोबैको खरीदा उस पे टैक्स, तो इनके ऊपर पूरे के पूरे टैक्स आ रहे थे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर थी। और जो ये टेल टैक्स है, दिस वॉज गिवन डायरेक्टली टू द स्टेट मीनिंग द गवर्नमेंट। और एक और टैक्स आ गया, टिथिस। दिस टैक्स वॉज कलेक्टेड बाय द चर्च। नाउ व्हाट वाज टिथिस? नाउ जितना भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होगा उसका 1/10 हिस्सा चर्च को जाएगा। दिस वॉज योर टिथिस। अब क्लर्जी और नोबिलिटी जो थे, दे वर 10% पॉपुलेशन ओनली, और जो 90% पॉपुलेशन थी वो थी आपकी थर्ड एस्टेट की। और जो 40% लैंड था, दैट वाज इन देयर हैंड्स, द थर्ड एस्टेट। जो बाकी 60% लैंड गया वो सारा इनके पास है, फर्स्ट और सेकंड, जो सिर्फ 10% पॉपुलेशन है उस कंट्री की। नाउ दीज वर द रीजंस। Coming back to the economic causes, this was only one cause. There were another cause which was economic cause. Now there is a term called subsistence crisis, very very important for exam point of view. Now what is subsistence crisis? We will study it now. Now what happened is, was the population of France, it started increasing from 23 million to 28 million, meaning 5 million increased from 1715 to 1789. And if population is increasing, so population increasing creates demand for food grains. Now demand for food grain also increased. नाउ द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, जो उस समय प्रोडक्शन हो रही थी वो उतनी नहीं हो रही थी जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही थी। पॉपुलेशन हद से ज़्यादा बढ़ रही थी, और प्रोडक्शन जो थी फूड ग्रेन्स की वो उसके साथ पेस नहीं बना पा रही थी, मतलब उसके साथ लेवल में नहीं आ रही थी। प्रोडक्शन हो रही थी कम, पॉपुलेशन हद बढ़ी जा रही थी बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा जो लेबर्स थे, वर्कर्स थे, उनको वर्कशॉप्स में काम करना पड़ा, और उनकी सैलरी या वेजेस भी बढ़ नहीं रही थी। सिचुएशन वर्स तब हो गई जब वहाँ पे ड्रॉट, सूखा पड़ गया, और हेल, हेल उसको बोलते हैं ओले पड़ जाना, जिसकी वजह से हार्वेस्ट और भी ख़त्म हो गई, फसलें ख़राब हो गई, और भी सिचुएशन ख़राब होनी शुरू हो गई। अब इसकी वजह से क्या हुई, स्केर्सिटी या फिर कमी हो गई फूड ग्रेन्स की, जिसको ही हम बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। सो दिस वॉज योर सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो एक भुखमरी वाली सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो गई। नाउ योर थर्ड वॉज पॉलिटिकल कॉज। नाउ जिस किंग की बात हो रही थी उसका नाम ये है लुइस 16, एंड he was very young when he was crowned as the king of France, and he married a girl called Marie Antoinette from uh, and this king belonged to the Bourbon dynasty. The Bourbon biscuit, as you remember, the same name was of his dynasty. Now रीज़न क्या हुआ था पॉलिटिकल कॉज में, काफ़ी टाइम से वॉर चल रहा था फ्रांस का काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ, जैसे वर्ल्ड वॉर था। अब इन्होंने क्या की थी, हेल्प भी की थी अमेरिकन कॉलोनीज़, अमेरिका के ऊपर भी राज चल रहा था ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन ने सिर्फ इंडिया पे नहीं, अमेरिका पे भी राज किया है। और उन्होंने अमेरिका पे जब राज करना या उनको कंट्रोल करना शुरू किया, तो फ्रांस ने 13 कॉलोनीज़ जो थी अमेरिकन,
उनको इंडिपेंडेंस दिलाया था, लड़ाई करवा कर उनकी हेल्प करी थी फ्रॉम ब्रिटेन। अब लड़ाई फ्री में तो होती नहीं है, उसकी वजह से क्या हुआ था, इनके ऊपर वो टैक्स नहीं, कर्जा चढ़ गया था बहुत ज़्यादा। और कर्जा कितना चढ़ा था, मोर देन अ बिलियन लिवरेज। ये वहाँ की करेंसी थी उस टाइम, अब वो चेंज हो चुकी है। तो 1 बिलियन से 2 बिलियन तक पहुँच गया था। अब इतना ज़्यादा वॉर लड़ने के बाद सारे रिसोर्सेज जो थे वो ख़त्म हो गए थे। तीसरी चीज़ जो थी, बहुत बड़ा कोर्ट था, और वो कोर्ट को संभालने का काम था राजा का, किंग का। और एक पैलेस था वर्सेलिस का, उसको भी चलाने में पैसा लगता था। तो ये सारा का सारा पैसा पूरा करने के लिए किंग ने सोचा कि मेरी मेंटेन हो आर्मी, कोर्ट भी मेंटेन रहे, गवर्नमेंट ऑफिस यूनिवर्सिटीज़ चलती रहें, तो क्या करते हैं, टैक्स बढ़ा देते हैं। तो ये सारा बर्डन जो था देश को चलाने का, वो टैक्स के रूप में, it was the burden tha, it was put on the third estate. Now this was the reason why third estate was angry from the king. Now next was growing middle class. Now 18th century में हुआ क्या, सोशल ग्रुप्स बहुत बढ़ने लगे, और वहीं पे टर्म आई है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास वो थी जो अपना वेल्थ अर्न कर रही थी थ्रू ओवरसीज ट्रेड, मतलब दूसरे देशों में अपना सामान बेच रहे थे, बाय मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड professions. Now this class which was working in this sector was educated. They believed that no group in society should be privileged by birth. So they believed that privilege should be given but on the basis of merit and talent, not on the basis of birth. Why were they getting these ideas? They were getting these ideas from philosophers. Now philosophers are those which put forth some ideas through books or novels. So they were inspired by the ideas of these philosophers. This is a very, very important question. We will learn who were these philosophers in this. Now, when they were inspired, so it became a matter of talk. ये एक मैटर बन गया बातें करने का, सैलॉन्स में, इन कॉफ़ी हाउसेज, और ये लोगों में फैलता गया थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। अब अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट गारंटीज इंडिविजुअल राइट्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल बन गया था दिमाग में पॉलिटिकल थिंकर्स के, कि वहाँ पे तो राइट्स मिल रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं। नाउ हु आर दीज फिलोसोफर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? द फर्स्ट वन वाज जॉन लॉक. He wrote a book called Two Treaties of Government. Just remember the book name and the idea because this is often asked in your exam. Now, what was the idea given by his book? It was, he criticized the doctrine of the divine and absolute right of the monarch.